Hello friends. So what if an essay on war comes tomorrow? एक possibility है कि essay का war पे आता है. तो थोड़े से यहाँ पे आपके लिए मैं I've brought some points. If a topic on war comes, there are three possibility कि या तो वो topic आपको pro war की बातें करे, sentiments की बातें हों कि it may ask you to say कि war is very good, मतलब not very good but in the sense the necessity of war. जो second stance है कि anti war और एक इन दोनों के बीच का जो है कि वो आपको खुला छोड़ दे टॉपिक कि whatever stand you want to take on the war. Okay, so now I will revert to English. So there are these three possibilities that a topic on war may come, and it may either ask you to take a pro stand or an anti stand or leave you in the open. So prepare some content. Just I will give you some content in 5 minutes so that at least some ideas you have. Pro war, remember, if the essay comes on pro war, 70% writes in favor of war, 20% write against the war, and if anti war comes, then 70% write in favor of war and 20% write against the war. 10% it's okay, you can take it anyway, and conclude on whichever side the topic is. So, for example, here let's take a topic here. I'm giving you a topic which is anti war, and the topic here is, which I've chosen is that only the dead have seen the end of war. मतलब कि वॉर इतना डेवास्टेटिंग है कि उसको सिर्फ जो डेड हो चुके हैं वही लोग देख चुके हैं. तो एक फेमस कोटेशन है, ये आप याद रखिएगा और इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको ऊपर अपने नोट्स में से दिखा रहा हूँ, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. Only the dead have seen the end of war. Quickly, we'll go through that. It says war is a never-ending process. It is a tale of perpetual destruction. It says both parties lose in a war. Only death is the winner. And why is it so? It is because it has a heavy cost even for the victorious side. And sooner or later, the defeated side will revert with vengeance. For example, Germany after WW1, World War One, it unleashed horror in World War II. And some ideas which are similar to that is that why only the dead can see the end of war. That it may be in your hand to begin a war, but you can't decide when it will end. And war is a chain of destructive reactions where there is no stop button. Next point here is that actual prices paid by the foot soldiers, जो असली price of foot soldiers pay करते हैं. The leaders may escape to safe havens or top generals may get awarded, but price of war, whether in defeat or in victory, is actually borne by the soldiers and their family. And citizens also have to face the burns. And the extra points here is that the damage is not only to life and property, but is not only in life and property, but psychological scars are also created, especially psychological scars जो war crimes होते हैं women's पे या children पे, especially they leave psychological scars. Nuclear weapons की आप बात कर सकते हैं. You can also talk about technological and psychological warfare. Next, one thing here you can talk about is that war is not only between armies, but also between non-combatants. मतलब citizens के बीच में भी होते हैं. Citizens are also affected. You can also talk about war of ideas and clash of civilizations. Now, counter ideas. Counter ideas to this topic, since this topic is anti-war. This topic has anti-war sentiment. The counter idea to this would be pro-war sentiment. Pro-war में क्या बात आती है? जैसे कि we can't be shy from preparing for war. And when we see historically, a culturally and economically superior civilization like ours was subdued and colonized. Okay, I'm just reading my points to save time, not explaining much. And then there is this very famous line that if you want peace, be prepared for war. ये कई लोगों ने बोली है. There have been American presidents के लिए भी इसे साइन किया गया, कई लोगों के लिए साइन किया गया है. फेमस लाइन है, if we want peace, we must be prepared for war. हो सकता है टॉपिक इस पे आ जाए. ये एक प्रो वॉर लाइन है. जो मेरा टॉपिक अभी मैंने आपको सजेस्ट किया वो एंटी वॉर है, लेकिन टॉपिक किसी ना किसी थीम पे आ ही सकता है. एंड नॉट प्रिपेयरिंग डिफेंस is like throwing open invitation for invaders. It's very simple statement. And Lord Krishna की जो philosophy है, if you see Lord Krishna, he is also seen playing flute, that symbolizes love, and he also has Sudarshan chapter that has weapon in it. So the conclusion here is, मतलब I am drawing conclusion towards the center, but slightly towards the anti-war sentiment here. And what the conclusion I'm drawing here is that while there is a need for war, but
There is no space for jingoism and warmongering. And एक लास्ट लाइन यहाँ पर लिखी गई है, लेट अस नॉट बी लाइक मिडनाइट आर्मीज क्लैशिंग बाय नाइट. एक पोएम में मैंने डोवर्स बीचना की पोएम में समझाया था. रिमेंबर, कंक्लूजन जो भी आपका हो, जो वॉर का जो सेंटीमेंट है, एंटी वॉर है तो एंटी वॉर की तरफ ले जाइएगा कंक्लूजन को. एंड इफ इट इज प्रो वॉर देन टेक इट टुवर्ड्स द प्रो वॉर. Next here is some lines if you want to remember. There are some words: disfigured humanity, wolves and beasts hungry for power, so and so. If you want to use, you can use. And these are some beautiful lines which I had given to my students. And this was written by W.H. Auden in year 1939. And he wrote it before the start of Second World War. What he wrote: in the nightmare of the dark, all the dogs of Europe bark, and the lighting and the living nations wait, each sequesters in its fate. I repeat, in the nightmare of dark, all the dogs of Europe bark, and the living nations wait, each sequesters in its fate. ये लाइन ऐसी लग रही है जैसे कि आज किसी ने 2022 में लिखी हो अबाउट यूक्रेन एंड रशियन क्राइसिस जो हो रही है, या नाटो या रशियन की तरफ जो हो रहे हैं. आगे की लाइन छोड़ दीजिएगा तो नहीं देख पाएंगे आप. ऐसे ही एक और लाइंस हैं ये: द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शंस व्हाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी. ये यीट्स ने लिखी हैं. आई डिस्क्राइब दीज पॉइंट्स, दीज लाइंस समवेयर अर्लियर आल्सो, सेकंड कमिंग नाम की पोएम में. किसमें लिखा है इसे छोड़िए, बेसिकली ने यीट्स ने लिखा था. ये लाइन जो मैंने आपको दी है रिलेटिवली ऐसी जो आपको याद इजीली हो सकती है. द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शंस व्हाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी. ओके, सो दिस इज द थिंग. अगेन आई रिपीट, टॉपिक वॉर पे आ सकता है तो आइदर इट इज प्रो वॉर, एंटी वॉर और समवेयर इन द मिडल. एक प्रो वॉर लाइन जो है वो ये है, फॉर एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन यू हियर, दैट इफ वी वांट पीस वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर. और एक एंटी वॉर सेंटीमेंट जो है वो इस टॉपिक को ही दिया हुआ है: ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वॉर. मतलब वॉर इतना डिवोस्टेटिंग होता है कि कोई उसका एंड देख ही नहीं सकता. मतलब एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट बोल दिया कि ओनली द डेड कैन सी. आई थिंक ये शायद ये आई थिंक प्लेटो ने बोला था. So with this, I will end this short discussion. Okay, I hope this will be beneficial to you. Thank you.